the market to cheer up the leaders and to wish the best of luck for our endeavor. Yeah, I'm very thankful to all the top leaders promoting for not just 3,000, right? 3,500 ppv. That's great. Thank you, Mr. HC. Sir, being your presence is one of our special occasion today. So actually, this session will be handled by Mr. Sujish, the Dxn Saga, and it is a brainchild of Sujish, this entire show, and he will be the host today. So being on your presence in our special occasion, we would like to launch a tool to the market today. So we want to have a gift to the market today and a short video which will explain about Dxn and also which will explain what direct sellers of Dxn do in their day-to-day life and what they are doing in Dxn. This will be a very powerful tool for our members to share with their prospects to let them know what is all Dxn is all about and what are the activities in Dxn and what are the lifestyle of the Dxn direct sellers. We made this video in 2 languages with the subtitles with English and also in Hindi. So we would like to have, with your presence, we want to launch this video on this show. That's Sujish? Good.
Okay, sir, some issues in Hindi. Yeah, no problem. That English video is enough. So Yeah. Hindi video is also there. So that's all, Sujish. So the show is yours. I'm ready to enjoy the show. So let me sit back and relax and to enjoy the show and the information with you and Mr. HC. So thank you, Mr. HC, and welcome you again for the show. Yeah, thank you, Mr. Rafiq. Thank you. So व्यूअर्स, so हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए. तो थियो सर को यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन चैट विद मिस्टर एचसी थियो. ओके, so sir, welcome to from on the behalf of all the viewers, I welcome you all again. And shall I start the questions? Yeah, before that, I would like to say thank you to all the leaders, the audience who are with me now to listen to us, having the chance for me to share with you about the latest development for Dxn Global. Okay, thank you so much, sir. So shall I start the question? Yeah, please. So your first question on the screen, sir. Okay. Your first question: why Dxn is the best option in the world, and why the future of Dxn members is secure in Dxn? Okay, I think this question is divided into two parts. The first part is why Dxn is the best option, and the second part is how secure is your future in Dxn. So let me answer the first part first. I think you have seen the video just now. Some of the answer are in the video. For instance, we are the number 15 in the world. We are a global company, and we are growing at the fastest rate of 20% per year. And besides that, I think I want to share with you, as a member of Dxn, what factor should you consider in order to think that Dxn is the best option for you? So I think the value proposition to you is most important. So value proposition to you as a member, as a consumer, as well as a business builder. So this is the most important consideration for anyone who want to choose a company to pursue his lifelong career. So what is the value proposition to you as a consumer? The value proposition will include the products. The products, whether the products are natural, whether the products are very good for you to do business, whether the product are with demonstrated benefit, and whether the products are of very high quality. These are most concerned to you. And of course, as a consumer, you want the products to be affordable. So in Dxn, our value proposition to you as a consumers are that the products are affordable and they are of very high quality. And to make sure that we are able to deliver this value proposition to you as a consumer, we have to make sure that the concept, the philosophy, and of Dxn will be intact and for long-term basis. So I would like to touch on the concept of Dxn, the one dragon concept, which is relevant to this value proposition to you. This one dragon concept means we have our own farms to cultivate the product. We have our own factories to manufacture the products, and we have our brands to distribute the product throughout the world, and we have you as our marketeer to sell the products.
and we are very strong. Dxn is very strong in biotechnology. So coupled with all this, we are able to provide the product at affordable price. So because our products are not controlled by third party, external parties, and we are able to control the quality as well as at low cost. That's most important. Then come to quality, we also have been certified externally by third party, by global recognized body. For instance, ISO, not only just 9,000, 14,000, 17,000. And we have the HACCP, we have the GMP, we have the TGM. All these are intact to ensure the quality of the products. And come to the natural ingredients, we have the biotech like tissue culture, like nanotechnology, like centrifuge filtration, like fermentations. These are very important technology to ensure the ingredients will be restored to its original form without damaging its original ingredients, the competencies of the products. And therefore, we are able to give you one of the best value proposition as a consumer. Then we go to the next area, value proposition to you as a business builder. What will you look for? What will you expect? What do you need by doing Dxn business? So this value proposition depends on, again, the philosophy and the concept. And our philosophy is to provide the system that is accessible, affordable, and is very simple for you to duplicate, and it can ensure success. And at the same time, this system must make sure that you can earn high income, good income, and is accessible to everyone. And this is embraced by us through our one world, one market concept. And within this concept, irrespective of whatever background you come from, whatever starting help you have, wealth you have to do the business, you are able to engage in the entrepreneurship, which is tailor-made to suit your need and what you want in life in doing the Dxn business. You will be able to pursue your lifelong career to obtain and achieve what you want in life. For instance, financial freedom, financial independence, and this system is applicable throughout the world, meaning to say one world, one market with one single membership. You will be able to do Dxn business throughout the world. Wherever we have a branch, you can just go there and do the business. And this is the beauty of our one world, one market. And with that, we also have a very clear vision, a vision to promote health, wealth, and happiness. And we believe everyone needs and wants to have health, wealth, and happiness. And through Dxn, we have this clear mission. You will be able to achieve the health, wealth, and happiness which you want in your life until you are able to obtain ultimate financial freedom. And once you have the financial freedom, you will be able to achieve some other freedom like travel freedom and time freedom. So this make Dxn
as one of the best option for you to do your business as well as a consumer. So now we go to the second part of the question. How will Dxn ensure security for your success? So in Dxn, we always talk about real company. We do not promote fantasy. When we talk about fantasy, fantasy is something that is not real. It does not exist. It does not happen. So you can see many companies in the market promoting fantasy. They talk like a magician. They give you a lot of promises, fantasy, and it's meant to be broken. But for Dxn, we are a real company, meaning to say we are committed to what we say. We are committed to what we promise you. So in Dxn, how can we ensure you success? How can we ensure you security in income? We are not talking about temporary success. We are talking about sustainable success, sustainability in doing the business. And to make sure that whatever you have achieved as a success in your life, it must be able to be sustainable and it should be lasting. And to ensure that, you have to choose a company like Dxn, a real company. Real in the sense that Dxn is stable and it is debt-free. And Dxn invest in opening up new farms, new factories, new branches, expanding the market throughout the world. And at the same time, Dxn also invest in coming out with new products like Korean cosmetic, new product like even ecotourism. You can travel to make money as one of the product like the Boulder Valley, like our Cyberjaya, Cyber Village. All these are products. And Dr. Lim, our founder and CEO, always say, in the past, you sell Genotherapy, you can become millionaire. You drink coffee, cheers with coffee, you become millionaire. Now, even if you travel to the world, you also can become a millionaire. That is Dxn. So Dxn also sell products which are natural and which will not be obsolete. That is very important. You have to choose the product that are not obsolete in due time, whether in this generation or the next generation to come. People or human beings need this product for their health. So Dxn will ensure security in this manner. And Dxn also very strong in biotechnology. We keep on doing our research and development into new technology in order to provide the best product and the best service to our members. And on top of that, the marketing plan. The certain feature of the marketing plan is to ensure security for your income. Let's say if you are earning 1 lakh per month now, it can increase to 2 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs, or even more. There is no limit in your income if you do Dxn business. And as you develop your network, you will get more and more. There is no limit at all. And the marketing plan ensure security in the sense that your membership can be inherited. When you pass away, you can pass your membership together with your status and your success to your spouse. Even if later on your spouse passes away, your membership, your success, your status
sponsor as a cloud ambassador can be inherited to your son or daughter in future. That means our security for your future is not just for this generation, it is even for your next generations to come. To that extent, we can assure you security. So think about it. Dxn give you all this as a platform for you to become successful in life and to make your life more meaningful and successful. That is my answer for you. And it can be seen with a video display, our future HQ in Malaysia. Let us have a look at the video. Mr. Sujis, can you play the video? So this is the video. तो सभी लोग ये देखें कि हमारा नया HQ है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि आने वाला है, जैसे कि मिस्टर SC ने कहा. So shall I translate, Mr. SC? Yeah, please. Okay. So दोस्तों जो सर ने बोला, मैं बहुत ही शॉर्ट में उसके बारे में बताऊंगा कि सर ने क्या बोला. सर ने ये चीज बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पहले वीडियो, जब रफीक सर आए थे तो उन्होंने एक वीडियो लॉन्च किया था, उस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो Dxn आपको क्यों चूज करना है उसका आंसर आपको मिल जाएगा. ओके, तो इस दो पार्ट हैं इसके. एक तो आपको Dxn बेस्ट ऑप्शन क्यों है, और दूसरा है कि आपको जो Dxn सिक्योरिटी कैसे देता है, ठीक है, हर मेंबर्स को. तो उसके बारे में सर ने दो पार्ट में बताया है. पहला तो सर ने ये बताया है कि पहले वीडियो में आप देखेंगे तो Dxn के फ्यूचर के बारे में, या Dxn आपको क्यों ज्वाइन करना है या क्यों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, वो आपको मिल जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल Dxn 15th अगर वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग में देखें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखें तो 15वें पोजीशन पे Dxn आज है. उसके अलावा ग्लोबली Dxn एक इंटरनेशनल कंपनी है. तीसरी सबसे बड़ी चीज उन्होंने बताया कि Dxn डायरेक्ट सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज होती है, उसमें से एक है प्रोडक्ट पावरफुल होना. एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तभी आगे बढ़ती है जब प्रोडक्ट पावरफुल होता है. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग प्लान.
उसमें से Dxn का जो प्रोडक्ट है वन ऑफ द बेस्ट और पावरफुल प्रोडक्ट है, क्योंकि उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, एक यूनिक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं। इस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, इस टेक्नोलॉजी से हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इस प्रोडक्ट के जो तत्व होते हैं, अंदर के जो नेचुरल तत्व, वो खराब नहीं होना चाहिए, अब उसको किसी तरीके की क्षति नहीं होनी चाहिए, वो बिना क्षति के हमें वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल मिलना चाहिए। तो नेचुरल चीज का ध्यान रखते, नेचुरल तत्व अपने प्रोडक्ट के अंदर बनाए रखते हुए उसको हमारे पास हम Dxn कंपनी पहुंचाती है बिना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, किसी तरीके का कोई आर्टिफिशियल चीज इसमें नहीं किया गया है। ओके, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोला। उसके अलावा वन ड्रैगन कंसेप्ट है, हमारी सबसे बड़ी एक ताकत ये है कि वन ड्रैगन कंसेप्ट पे Dxn काम करता है। वन ड्रैगन मींस दोस्तों कि हम इसका कल्टीवेशन से लेकर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन तक खुद करते हैं। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने मलेशिया गए होंगे तो वहां हमारा फार्म आपने देखा होगा, इंडिया में भी अभी हमारा फार्म स्टार्ट हो चुका है और हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में है। तो मलेशिया का जो सबसे बड़ा फैक्ट्री, तो उससे भी बड़ा फैक्ट्री हमारे यहाँ लगने वाला है, तो उसके बारे में थियो सर बात करने भी वाले हैं। तो हमारा जो फार्म है वो खुद के फार्म है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा खुद का है। तो हम ये चीज रख के हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको हम मेंटेन रखते हैं। उन्होंने वही चीज बोला, मार्केट में बहुत सारे अच्छी क्वालिटी की चीजें मिलती है बट अफोर्डेबल नहीं होता, उसको हम कई बार खरीद नहीं पाते। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल अफोर्डेबल है और इजीली हम परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने दूसरी चीज बोली कि दूसरी नेटवर्क में जो चीज है सिस्टम, मार्केटिंग प्लान पावरफुल होना चाहिए। हमारा जो मार्केटिंग प्लान है डुप्लीकेबल मार्केटिंग प्लान है, सबके लिए आसान है, इसलिए आप देखेंगे साधारण लोग Dxn में सक्सेसफुल हुए हैं। तो Dxn के थ्रू सक्सेसफुल साधारण लोग इसलिए हुए हैं क्योंकि सब लोग इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति ही इसको कर सकता, कोई भी, किसी भी तरीके के लोग या किसी भी तरीके एजुकेशन वाले लोग, किसी भी फील्ड के लोग Dxn की बिजनेस को करके करोड़पति बन सकते हैं। तो हमारा सिस्टम इतना इजी है और हमारे सिस्टम की सबसे खास बात वन वर्ल्ड वन मार्केट है, जो इवन जहां तक मेरा नॉलेज है वहां तक किसी कंपनी के पास ये सिस्टम नहीं है, वन वर्ल्ड वन मार्केट सिस्टम। मतलब एक कंट्री में आपने कोड लिया और एक कंट्री में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ऑल ओवर द कंट्री से जहां से भी आपका बिजनेस होगा उसका बोनस आपको यहाँ एक कंट्री में बैठ के मिलेगा दोस्तों। वंडरफुल सिस्टम है वन वर्ल्ड वन मार्केट सिस्टम, एक यूनिक सिस्टम। और उसके अलावा Dxn का हमेशा एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ भी मिलना चाहिए, वेल्थ भी मिलना चाहिए, दोनों मिलेगा तो हमें हैप्पीनेस मिलेगा। डॉक्टर लिन ने हमें यही चीज दी, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अगर हम चले तो उन्होंने वही बोला कि Dxn आपको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है। Dxn सिक्योरिटी इसलिए प्रोवाइड करता है कि आप Dxn को देखेंगे तो एक रियल कंपनी, एक वास्तविक कंपनी है, काल्पनिक कंपनीज नहीं है। तो वास्तविक और काल्पनिक में बहुत फर्क होता है। बहुत सारी कंपनीज आपको गलत प्रॉमिसेस देते हैं, हम ये आपको ये देंगे, हम वो देंगे, बट कई बार वो चीज प्रॉमिस को वो रख नहीं पाते हैं और वो प्रॉमिस को पूरा भी नहीं कर पाते हैं। बट Dxn आप देखेंगे बिल्कुल रियल है, जेन्युइन कंपनी है, इसमें किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं की गई है, चाहे वो मार्केटिंग प्लान हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे सिस्टम हो, हर तरीके से ट्रांसपेरेंट सिस्टम है हमारा। और Dxn एक रियल कंपनी के तौर पे माना जाता है। तो आपका सिक्योरिटी यहाँ एंश्योर है, किसी तरीके की आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, आपका लाइफ पूरा सिक्योर्ड है इसके अंदर और Dxn आपको सिक्योरिटी एंश्योर करवाता है। उसके अलावा Dxn ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जैसे कि आपको, अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा कि हमारा लाइफ यहाँ सिक्योर कैसे है, लाइफ सिक्योर आप देखेंगे तो Dxn देखिए कितने करोड़ों रुपए Dxn इन्वेस्ट कर रहा है। अभी देखिए तेलंगाना सिद्दीपेट में कंपनी ने कितना करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड Dxn इन्वेस्ट कर रहा है दोस्तों। और उसके अलावा Dxn एक नेचुरल प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा हमारा मार्केटिंग प्लान, सर ने वही बोला, मार्केटिंग प्लान और जो प्रोडक्ट है ये दोनों ताकतवर है। प्रोडक्ट अपने आप में एक प्रोडक्ट पावरफुल है कि खुद की टेक्नोलॉजी है और मार्केटिंग प्लान सबसे पावरफुल मार्केटिंग प्लान में से है। तो दोनों चीज जब मिल जाता है तो Dxn अपने आप में एक पावरफुल बन जाता है। हमारे मार्केटिंग प्लान में अगर आपको अगर कुछ हो भी जाता है तो आपका जो इनकम है, आपकी जो पीढ़ियां हैं उनको वापस मतलब मिलता है, आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट Dxn प्रोवाइड कराता है। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में इस तरीके की जो बेनिफिट जो मैंने गिना है बहुत कम पाए जाते हैं, तो उसमें सबसे पावरफुल कंपनी है Dxn। तो दोस्तों आपका लाइफ यहाँ पे बिल्कुल सिक्योर है, बेफिक्र होकर Dxn कर सकते हैं। या
Okay, I translated this, Mr. C. So now Yeah. the second question for you. Okay. As you are the in charge of Dxn Globe, so kindly share the observation which you have seen in the Dxn market and the leaders before and after COVID-19, which helped them to grow their business. Please, sir. Okay. I think we were caught, the whole world was caught by surprise and unprepared by COVID-19. And almost all sector of business were affected. And DXN is no different. But the point here is DXN has recovered very fast within 3 months. In the month of July, we have fully recovered our sales. We come back to normal. And even recruitment, the number of recruitment for most countries has already reached the same level as before COVID-19. And we believe our sales and our recruitment will exceed the figure in February before COVID-19 in a couple of months. And from this COVID-19, we have learned a lot together with our leaders. And what we have learned, the most important learning session is for the transformation. DXN as a whole, whether the company or the market or the leaders, we are able to adapt to the change, to face the challenge. We are able to transform the company for all the activity in the conventional way into the online marketing. Almost 100% are now on online marketing. And we have set up our online purchase system for all the branches throughout the world by now, within 3 months. All the branches are having online purchase system. And we have a lot of online activity throughout the world by every branch, by our top leaders. And our top leaders have also equipped themselves to the latest technology using the social media like Facebook, like Zoom, like Instagram, and so many others. And even our CEO, our founder, Dr. Lim, he has also set up his Facebook account. And if you visit his account, you will realize every week he will post 3 video clips into the Facebook account. One is about coffee talk, another one is Genotherapy, and another one is Sunya. So at this point of time, actually is the blessing in disguise, in the sense that our members, our leaders, even staying at home at their convenience, they are able to access to all kinds of training, activity, presentation, sharing throughout the world, and almost every day. And within a day, there will be a few for you to attend, to learn, to pick up from our great leaders, successful leaders, from key personnel of management. So the pace of growth, the pace of learning at this point of time is so fast compared to before COVID-19. Our members, our leaders are exposed to all kinds of information, and with the touch of the button, and you have handphone, easily at any part of the world, they can listen to any leaders, any presentation, any activity of the company by any branch throughout the world at any time and at any place. So that is very, very powerful. So this is the transformation we have seen. And another area of importance which we have learned is there is
a great demand for our products because our products are good for boosting the immune system and is proven good against COVID-19 as a preventive measure. So we can see the demand, the aggregate demand worldwide for our products is increasing at a very fast rate. And we are sure pretty soon, a couple of months, our sale will be much more before COVID-19. That is about the aggregate demand for the product of our of Dxn because it suit the need of the time to boost up immune system. And another area also very important to you as a networker, Dxn is able to offer an opportunity to the unemployed. As you are well aware, many companies are facing financial crisis and some are already at the verge of collapsing, bankruptcy. And once this happens, a lot of employees will lose their job and become unemployed. And this is where Dxn come in to offer them a golden opportunity for them to pursue a lifetime career. And when they choose Dxn, the good part of our business, which we have learned, is there's no need for you to invest, and there's no need for you to get prepared. There's no big startup capital needed. There's no experience needed. You just join and we'll teach you how to do the business. And you can do it at home. Even you are at home, you are unable to travel because of total lockdown. No harm. You still can do networking using whatever provided by the company as well as the leaders. There are tons of training activities for you to pick up within a very short span of time. You can pick up a lot of knowledge, skill for you to do the business. So we provide good employment opportunity for you to do the Dxn business. These are the three main areas we have learned from this COVID-19. One is transformation into using online marketing. Second, we provide golden opportunity for the unemployed. And the third one is the demand for our product is on the rise. So these are what we have learned. Thank you. Okay, thank you. I'm also fully agree with you, Mr. C. And in India, it's a huge crisis, especially in unemployment. So definitely. So I will translate this one. And दोस्तों सर ने वही चीज बोला कि आज तीन मेन चीज हैं जो सर ने बोला कि कोविड से हमने सीखा है या कोविड एक चैलेंज के तौर पे हमने लिया है। पहली चीज है कोविड-19 में हम फुली ऑटोमेटिक हो गए, फुली ऑनलाइन आ गए। ना केवल कंपनी के कुछ ऐसे जैसे ऑनलाइन परचेसेस, हम ऑनलाइन परचेस पे नहीं थे, ऑनलाइन परचेस हम लेके आए। ना केवल कंपनी, हमारे लीडर्स ने भी ऑनलाइन चीजें स्टार्ट किया। ज्यादातर फेसबुक या यूट्यूब ये वगैरह हम बहुत कम लीडर्स इसको यूज करते थे, बट आज अगर देखें हर लीडर इसको यूज कर रहा है, ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहा है। तो ये कोविड-19 से पहले और बाद में ये ना केवल इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज देखने को मिला है। तो पहली चीज तो है ये एक चैलेंज था जिसको हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, हमने नई चीज सीखी ऑनलाइन। इसके अलावा जो सर वही बोल रहे हैं, हमारे सीईओ ने जी भी, जो हमारे बिलाउड दातुक डॉक्टर लिम हैं, उन्होंने भी अपना खुद का फेसबुक अकाउंट बनाया और उसके आप देखेंगे वीकली 3 मीटिंग्स वहां पे चल रहे हैं। तो हम लोगों ने भी उसको देख के हम लोगों को भी अलग अलग चीजें मिला। अभी जैसे एज ए मैनेजमेंट हमने भी हमारे साथ पीसीस ने मिलकर कुछ ना कुछ नए शोज चालू किए, हर लीडर मिलकर कुछ शोज चालू कर रहा है और कर चुके हैं। कई लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है घर पे बैठ के भी। और उसी का ही नतीजा है दोस्तों कि हमारा जो बिजनेस है कोविड से भी अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो हम उस बिजनेस को क्रॉस कर चुके हैं और वहां पहुंच चुके हैं और आने वाले टाइम में और भी तेजी से बिजनेस बढ़ेगा। कोविड से पहले जो बिजनेस था उससे भी ज्यादा बिजनेस हमारा आने वाला है।
और सेकंड जो सर ने बोला कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बहुत बढ़ गई, कि इम्यूनिटी के ऊपर ही गवर्नमेंट बात कर रही है कि इम्यूनिटी वाला प्रोडक्ट खाओ, इम्यूनिटी वाली चीजें यूज करो, इम्यूनिटी अच्छा है उसको कोरोना नहीं आएगा। तो ये चीज हर जगह पूरा वर्ल्ड में बात कर रहा है, और हम तो ये चीज कम से कम पिछले 27 साल से बात कर रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डीएक्सन का प्रोडक्ट खाओ, डीएक्सन प्रोडक्ट ओनली फॉर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। हम बीमारी के ऊपर बात ही नहीं करते, तो हमारे लिए तो एक खजाना खुल के सामने आ गया है। तो इम्यूनिटी के लिए हमारा प्रोडक्ट सबसे पावरफुल है, हम लोग जानते हैं, हमें बस लोगों तक पहुंचाना है। लोग ढूंढ रहे हैं इम्यूनिटी का पावर प्रोडक्ट, तो हमारे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया है। तीसरी चीज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट सर ने बोला, और आप लोग जानते हैं कितनी सारी कंपनीज में लोगों की जॉब चले गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जॉब नहीं है, और अगर किसी का जॉब बचा भी हुआ है तो उसको पेमेंट 50% मिल रहा है, 60% मिल रहा है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें कट डाउन हो रहे हैं, तो लोगों के ईएमआईज नहीं भर पा रहे, लोग बहुत सारा मतलब टेंशन में, स्ट्रेस में है। तो हम अपना डीएक्सन एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि भाई आप घर बैठ के, बाहर जाने के भी पैसे नहीं है तो बाहर भी जाने की जरूरत नहीं, घर बैठ के आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर ने ये 3 चीज बोला। पहली चीज, हम ऑनलाइन हर चीज वर्चुअल लेके आ गए, ऑनलाइन चीजें करना सीखे हम, जो फ्यूचर का डिमांड है वो हमने पूरा किया, और वो चीज हमने सीखा। सेकंड चीज है, हमारे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया। सर वही बोल रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, हमारा प्रोडक्ट का इतना तेज डिमांड बढ़ेगा कि लॉकडाउन से पहले जो बिजनेस था उससे भी दुगना बिजनेस हमारा यहाँ पे लॉकडाउन के बाद आने वाला है। तीसरी चीज, हम लोगों को रोजगार देते, रोजगार मांगते हुए लोग आएंगे, तो हम पहले उनके पास अप्रोच करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाया जाए। ओके, यस मिस्टर। Okay, next question, please. Next question for you regarding Shunya sir. As Dxn Global Marketing in charge, can you please share your opinion about Dr. Lim's success secret? Shunya, why Shunya is important to our members? This question I ask you because a lot of questions are coming that Shunya is like meditation, and like then is it directly related to our income? If we do the shunya, like this type of questions are coming from the market. If we do the shunya, our income will increase or not, like that. Okay, I think if you always listen to the video clip of our founder, Dr. Lim, I believe you know the reason why Sunya is so important to us. So let me summarize or make it in brief form. Dr. Lim always says that since day one, the inception of Dxn way back in 1993, the company has been using Sunya in practice, whether you're aware or not aware. And such, for instance, terms like genotherapy, like heal without healing, sell without selling, these are using the principles of Sunya way back in 1993 until now. So therefore, it is important for us to know and understand the basic 6 principles of Sunya, which Dr. Lim always share with us. So the first principle talk about to give and to sacrifice without condition. So that I think need not to explain further. And the second one is to discipline and do no harm. Of course, I believe you also understand. Most importantly is about self-discipline, and we need to maintain discipline for the market, and we are serious about that. And the third one is to endure difficulties and failures. So in business, you can avoid failure, or you cannot avoid difficulties, bound to happen. But we must learn how to endure, how to face the difficulty and failures. It cannot be smooth sailing all the time. Crisis, like now we are facing crisis. But how can you accommodate to the failure or the difficulties? Face the challenge is our culture. Then we turn the difficulties into our golden opportunity.
And after that, you have to exert. The fourth principle is to exert energy to do our duty. For instance, if we are faced with difficulty and failure, don't give up. Don't stop there. Keep on putting in your effort to find solution, to face it, to overcome it. Just like in this COVID, is no joke. It's very serious. But how could we recover within 3 months? Fully recovered, 100%, maintain the sales. Because we practice sunya, to exert energy, to focus on it, and we do our duty. What should be done during this time? Stock level, production, and even skeletal workforce to serve the service. This is what we have been doing. Then after that, the fifth one is to focus on your mind and calm it down. Especially during this time, it's most obvious our mind is so disturbed, so irritated, and our mind is even confused. And we have so much of fear. You have to calm it down, to concentrate on it, to calm it down, using sunya, reverse counting. Then the last is to practice awareness through breathing. Meaning to say, when you practice sunya, it's not just a mere meditation, right? You practice awareness. You know exactly what is going on around you. You are fully aware so that you are able to face it and you're able to overcome it. These are the 6 basic principles of sunya from day one until now, 1993. So only recently that Dr. Lim keep on talking about sunya. So many people always think sunya just got started recently. No. We have been with him all this year. He has been telling us all these years. And you can see that this is called the Natural Approach of Dxn through sunya. So the Natural Approach of Dxn has helped Dxn to face the adversity, the challenges, and the difficulties over all these years, 27 years. How could we make it to the top? Because we practice sunya. We're able to face it, not just emptiness. From emptiness, you learn, you pick up a lot of things. That is the true principle of sunya. So you can see the natural approach as advocated by sunya in Dxn can be observed through the following. For instance, in genotherapy, when we talk about genotherapy, we talk about the system of the body, and we do not intervene on the system of the body. What we do is to support the body by providing the nutrition, our products as nutrition needed by the body. So when the body is strong, it boosts up the immune system, the body itself can take care of its own health problem. That is how we practice sunya through genotherapy. And in, for instance, marketing, we Dxn never disturb our distributor to expand their network throughout the world. Wherever they want to go, please go ahead. And you do Dxn business. But when you need the support of the company will come in to play our role. This is sunya. We do not intervene in your networking, but we are ready to support you whenever is needed. Also come to cultivation. How sunya is being observed or practiced through cultivation. We never interfere with nature. We don't disturb nature. We don't harm nature.
but we use nature to the best of our benefit. In cultivation, we don't use fertilizer, we don't use chemical, we don't use pesticide, we don't use insecticide, nothing artificial. So it's natural cultivation. So we call it eco farming. And that is even certified by ISO 17000, eco farming. And come to distribution, come to production. We also practice shunya without using any process that will harm or destroy the natural ingredients of the products. For instance, we use natural fermentation. We use nano separation for the product from solid form. And we use micro powderization. We use centrifugal filtration. All these are natural process. And we don't use heat treatment. We use cold treatment in order to preserve the competency of the ingredients found in the natural products. And all these are actually using the principles of shunya. So now you can see how we use shunya and why. Don't get confused as if it is just a meditation. It is far, far beyond that. Please remember that. Not just physically, but also mentally, so that you are balanced and so that you will use shunya to achieve your peace in mind, as well as you will be able to achieve the prosperity. So remember, don't get confused. This is the true version of shunya as far as I understand from our founder and CEO, Dr. Lim, to share with you. Thank you. Okay, excellent, sir. Excellent. Very simple language. We understood in 2-3 points, and Okay. I think we just cleared all our doubts. Okay, so I will translate this to in our viewers. दोस्तों बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में थियो सर ने अभी हम लोगों को बताया कि कैसे शून्य के बारे में, मतलब शून्य और इसमें क्या कैसे है, मतलब कई लोगों को डाउट होता है ना कि शून्य से हमारा बिजनेस कैसे रिलेट करता है, कई बार ऐसा डाउट होता है। और कई बार लोगों को ये भी डाउट रहता है कि शून्य अभी नया नया आया, ये नया नहीं आया। थियो सर ने वही बोला कि शून्य जो है जब कंपनी स्टार्ट हुआ था 1993 में, तब से डॉक्टर लिम ने कंपनी में इंट्रोड्यूस किया। बट हम लोगों ने सुना है जो लोग भी शून्य रिट्रीट में गए थे, जब डॉक्टर लिम 10 साल के थे तब से शून्य प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बहुत से लोगों का डाउट भी रहता है कि इतने कम साल में 27 इयर्स में डीएक्सन इतना फास्ट कैसे ग्रो हुआ। उसका एक बड़ा रीजन है शून्य। डॉक्टर लिम ने कंपनी के जो स्थापना है वहां से लेकर इवन डिस्ट्रीब्यूशन लेवल तक हर जगह आपको शून्य दिखेगा। तो डॉक्टर लिम ने इनके जो 6 प्रिंसिपल्स हैं उसी में से ही उन्होंने चीज बोला कि शून्य के ये 6 प्रिंसिपल्स हैं, और ये प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करेंगे तो शून्य ऑटोमेटिकली इसके अंदर है। तो कुछ है जैसे सेल्फ डिसिप्लिन और फेस द डिफिकल्टीज को फेस करना, आपके अंदर जो एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी, कई बार हम डेस्क हो जाते हैं, डिफिकल्टी आती है तो हम डेस्क नहीं होना है, आगे करते रहना है और माइंड को फोकस करना है एंड शून्य को रेगुलर प्रैक्टिस करना है। अब ये जो शून्य है ये एक नेचुरल अप्रोच है, डीएक्सन का एक नेचुरल अप्रोच है शून्य। कैसे उन्होंने बहुत अच्छे से और थियो सर ने समझाया। एक पहली चीज गेनोथेरेपी उन्होंने बोला। गेनोथेरेपी क्या है? गेनोथेरेपी, अगर आपका बॉडी का सिस्टम अच्छा नहीं है, ये बॉडी अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो गेनोथेरेपी आपको इतना बेनिफिट नहीं देगा। तो हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि बॉडी को एक अच्छा रखना बहुत जरूरी है, तभी वो गेनोथेरेपी इतना इफेक्ट करेगा। तो गेनोथेरेपी एक तरीके से देखा जाए शून्य है, तो हमारी बॉडी को, क्योंकि हम शून्य प्रैक्टिस के साथ गेनोथेरेपी अभी देते हैं। शून्य प्रैक्टिस करो देन गेनोथेरेपी उसके साथ में आ रहा है। तो शून्य प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो माइंड है वो माइंड का एक आहार, फूड बोल सकते हैं हम इसको शून्य को। तो माइंड को स्ट्रेस से हटा के रखता है, हमें टेंशन से दूर रखता है और अपने आप को कूल बनाने में और अपने माइंड को शांत करने में, पीस मिलने में हमें मदद करता है। तो ज्ञानोथेरेपी है, जब ज्ञानोथेरेपी मतलब ज्ञानोड्रामा देना एक व्यक्ति को, तो और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है।
दूसरी चीज सर ने वही बोला कि एक अगर शून्य को आपको समझना है, एक ही चीज एक लाइन में आप समझ लीजिए कि हम किसी शून्य मीन्स किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करते हैं। शून्य मतलब जीरो, कुछ नहीं, नथिंग। तो इंटरफेयर नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आप पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाके बिजनेस कर सकते हैं, आपको कंपनी इंटरफेयर नहीं करेगी, आपको इधर नहीं करना, इधर नहीं करना। जब भी आप बिजनेस करेंगे, डेवलप करेंगे, तो कंपनी की जब जरूरत होगी तो आप बुला लीजिए, कंपनी वहां पे आपकी मदद के लिए हाजिर है। तीसरी चीज बोला कल्टीवेशन। कल्टीवेशन हमारा जो हम फार्मिंग करते हैं बिल्कुल नेचुरल अप्रोच है, और नेचुरल चीज को हम छेड़ते नहीं है। मतलब कोई पेस्टिसाइड हम यूज नहीं करते, कोई कीटनाशनी हम यूज नहीं करते, किसी तरीके का, सब कुछ नेचुरल है। फार्मिंग पूरी तरीके से नेचुरल है। मतलब जो नेचर जिस तरीके से उगना चाहिए उसी तरीके से उगता है। मतलब ये एक तरीके शून्य है, मतलब नेचर को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे। विदाउट डिस्टर्बिंग नेचर हम हमारा कल्टीवेशन हो रहा है। इट मीन्स ये एक शून्य है, मतलब डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि अभी कल्टीवेशन में हम इको फार्मिंग यूज करते हैं, कि जो कि सर्टिफाइड है, ISO 17001 से सर्टिफाइड है। प्रोडक्शन सिस्टम में अगर आते हैं तो उन्होंने वही बोला शून्य प्रोडक्शन में भी है। प्रोडक्शन में किस तरीके से है शून्य? प्रोडक्शन जब भी करते हैं तो हम सब नेचुरल या जो सिस्टम है ना, उसका जो ऐसा कोई भी प्रोसेस हम यूज नहीं करते जिससे हमारे प्रोडक्ट के तत्व को, किसी भी एलिमेंट्स को नुकसान पहुंचे। क्योंकि हम फार्मिंग इस तरीके से करते हैं कि जो गैनोडर्मा है, स्पायरना है, उसका तत्व खत्म नहीं चाहिए, उसके तत्व को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जब प्रोडक्शन करेंगे तो भी इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। तो डॉक्टर लिन ने शून्य को वहां पे भी इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया। हम सेंट्रिफ्यूगल प्रोसेस को हम यूज करते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि किसी भी तत्व को वहां नुकसान नहीं होना चाहिए। वहां पे भी क्या हो रहा है, हम नेचुरल चीज को के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, हम किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, कोई चीज में अलग से नहीं जा रहे हैं। तो वहां प्रोडक्शन में भी शून्य है। उसके बाद अगर आप देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप किसी भी शून्य और मेडिटेशन, कई लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि शून्य ओनली मेडिटेशन है। तो सर वही बोल रहे हैं कि मेडिटेशन से भी बढ़कर है, मेडिटेशन से भी बहुत दूर है, क्योंकि शून्य आपको हर तरीके से आपको पीस प्रोवाइड करता है और प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करता है। यस सर, thank you so much sir, and give me a wonderful answer, and in a very simple way. Okay, thank you. And for your question, next question sir, on your screen, we already have a powerful marketing plan, simplified marketing plan. Then why we introduce IOC in India as the 23rd country of Dxn world? And so this question I ask you because some people are doing only SIM, some people are doing only IUC. They think that only one income we required, and this type of confusion is going in the market. Can you please highlight on that? Okay. As the name implies, IOC is icing on the cake. The cake is the SIMP, or the mothership. So icing on the cake, icing is IOC is a promotional package, supplementary package, and is optional. IOC cannot do without SIMP, but SIMP can do without IOC. Then why should we have IOC? There are a few reasons why we implement IOC throughout the world. The one of the most important reasons is if you buy IOC, you will have seed stocks, SEED, seed stock. You need the seed stock to do the business, especially to become a mini Dxn, especially when you want to travel to far-flung area in order to do the business. You have to bring along sufficient stock of Dxn products so that you can sell on the spot, or you can do recruitment with the product. This is called seed stocks. By buying IOC, you will have a package of stock sufficient enough for you to do the Dxn business wherever you go and whenever you want to do it. The second reason is IOC is good for you to do volume business. Some people
prefer to do volume business as a package. You buy a package and you sell a package, the volume involved is big. And that is very good for business builder. If you want to earn more income by selling more products, that is second benefit. The third benefit is IOC has been introduced to the world many years ago, way back in 2012. The first is Philippines, then it spread to Latin America, and now in India, the 23rd countries. So with icing, you will be able to enjoy the commission or the bonus of buying icing by your downlines overseas. If you don't buy icing in India, whoever your downlines overseas buy icing, you will not be entitled to the bonus from the icing. So this icing is additional. If you buy it now. From day one, you buy icing. From there onwards, until you die, you will keep on earning icing bonus as long as your downlines buy icing, whether in India or outside India, any countries which buy IOC who are your downline and within 11 generation or 11 level of your network. So you will be able to enjoy bonus from icing internationally and locally, as well as for the present and for the future. And we always say, SIMP, S-I-M-P, is slow and steady. And icing is fast and reliable. So if you combine SIMP and IOC, it is a perfect match. Not only it can be slow, steady, fast, and reliable, so that you can achieve exponential growth in your income. And that are the reason we promote icing throughout the world. And remember, it is optional and it's a volume business. So thank you. Yes, exactly, sir. I will translate this one. दोस्तों, सर ने यही बोला कि IOC और SIMP ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केटिंग प्लान्स हैं। अब सर ने ये बोला कि हमने IOC ऑलरेडी हमारे पास इतना पावरफुल मार्केटिंग प्लान है, तो IOC हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया? IOC इंट्रोड्यूस करने की कुछ रीजंस हैं। जैसे कि हमें बिजनेस करने के लिए एक सीड स्टॉक चाहिए होता है। ओके, सिंप में आप देखेंगे कि हमें प्रोडक्ट परचेज करना ऐसा कोई जरूरी है, कंपलसरी नहीं है। ओके, बट विदाउट, अगर प्रोडक्ट ही नहीं आपके हाथ में आएगा तो आप बिजनेस कैसे करेंगे? तो आपको पहले सिंप में ज्वाइन होना है। उसके बाद IOC का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप एक पैकेज होता है इसमें, और ये पैकेज में आपको एक ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट आपको हाथ में मिल जाता है। तो एक प्रोडक्ट आपके हाथ में आ गया तो आप बिजनेस इजीली कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बहुत सारे लोग वॉल्यूम बिजनेस पे ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, मतलब तेजी से आना चाहिए, पैकेज बिजनेस होना चाहिए, फटाफट पैकेज टीम में दिए, ज्वाइनिंग लाए, पैकेज के थ्रू लेके आए, तो उनको फास्ट इनकम और इमीडिएटली इनकम उनको जल्दी जल्दी मिलता है। उस इनकम पे, उस तरीके की बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और IOC जब आप लेते हैं तो इस तरीके का बिजनेस आपकी टीम में जनरेट होता है, क्योंकि ये पैकेज है और तेजी से वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, अचानक जल्दी जल्दी वॉल्यूम बढ़ता है। ओके, एंड तीसरी चीज ये है कि जैसे कि IOC फिलीपींस में जब इन्होंने कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद से अभी तक 23 कंट्री में लॉन्च हो चुका है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप किसी भी एक कंट्री में, जिस कंट्री में IOC है, आप एक बार लाइफ में एक ही बार किसी भी कंट्री से परचेस कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं आपने इंडिया में परचेस, जब इंडिया में IOC लॉन्च हुआ था तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी पाकिस्तान है या अदर कंट्रीज जहां पे ऑलरेडी IOC लॉन्च हो चुका था, वहां से उन्होंने परचेस कर लिया था, तो उन्हें इंडिया में परचेस करने की जरूरत नहीं था। तो एक बार परचेस करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी भी एक कंट्री से वन टाइम लाइफ में एक ही बार परचेस करना है,
और करने के बाद आपके टीम में जब भी आईओसी परचेस होगा, जो भी जनरेशन रहेगा उस जनरेशन के हिसाब से आपको बोनस मिलेगा। ये आईओसी का सबसे बड़ा ब्यूटी है। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज। अब यहाँ पे सिंप और आईओसी सर दोनों चीजों में बता रहे हैं। सिंप क्या है? स्लो और स्पीडी है, आराम से चलता है, धीरे धीरे बट कंटिन्यूस आता रहता है। और आईओसी जो है वो है फास्ट एंड रिलायबल, जिसपे हम विश्वास, आप एक तरीके से फास्ट मतलब बहुत तेजी से इनकम हमें आ रहा है, बहुत तेजी से इनकम हमें बढ़ रहा है। तो अगर दोनों को अगर हम मिक्सअप कर देंगे, आईओसी और सिंप दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे, दोनों अगर हम लेंगे, दोनों तरीके की बोनस करेंगे, प्लान को अगर हम यूटिलाइज करेंगे, तो हमें ये चारों चीज मिलने वाला है, स्लो, स्पीडी, फास्ट एंड रिलायबल। ओके, ये चारों चीज हमें मिलेगा तो तेजी से इनकम भी मिलेगा और हमें एक इस तरीके एक स्थिर बोनस, स्थिर इनकम आपको यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। तो फिर भी आप ध्यान ये रखें, आईओसी कंपल्सरी नहीं है। ओके, ये ऑप्शनल है, कंपल्सरी आईओसी नहीं है। आप जिसको तेजी से इनकम चाहिए और आपको बिल्कुल स्थिर इनकम चाहिए, तो दोनों सिंप में आप ज्वाइनिंग करके आईओसी पैकेज जरूर लें और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यस सर। So your next question for you on the screen, sir. Can you please highlight the social work of Dxn worldwide, especially about our new campaign ODOC? Okay, I think Dxn has been involved in social work many years back, especially through the NGO, for the hospital, and also charity organization during calamities like earthquake and flood. And in India, quite often we do that, like the Kerala flood. We do donate and some other incidents. So recently, Dr. Lim has signed an MOU with INSAM for the contributing 50 kilogram of spirulina every month to help the acute malnutrition children in countries like Africa, India, and Pakistan. So we also at the same time launched the $1 for one child. That means you contribute $1 USD per month to help one children under the acute malnutrition program. So we want to thank you, especially our members in India. We have the most number of contributors from India. In the month before last month, the number was 900 plus. And last month, the number of contributors was increased to more than 1,000. Yeah, thank you very much for your contribution. And if you go and visit our website, we are trying to put up 3 lists on ODocs. One list is showing the countries who have contributed for the ODocs and how many people have contributed. Of course, India top the list. Yeah, India now have more than 2,000 contributors. And the next second list is about a list of the top contributors. Who are the top contributors? So if you are in the list, you are great. And the third list is for those who have contributed more than 100 USD, yeah, accumulatively. It will appear in the list and shown in our website throughout the world. So for those who have contributed, we want to say thank you very much for your generosity. And for those who have yet to contribute, we would like to invite you to participate in this very noble and very good cause of charity to the very needy people. Yeah, thank you very much.
Yeah, exactly, sir. And we are also thankful to IMSAM because due to their MOA sign, after that the reputation and brand it is increased in the especially in India in between the direct selling industry. तो दोस्तों कि सर ने यही बोला कि अब मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। सर ने यही बोला कि हमने बहुत सारे ऑलरेडी चैरिटी में हम ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, पहले से इन्वॉल्व थे। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा वो पहले भी जो बहुत सारे फ्लड्स हुए हैं अभी नेपाल का मेरे को आज भी याद है, नेपाल अर्थक्वेक हुआ था उस टाइम पे डीएक्सन कंपनी ने आप लोगों के साथ मिलकर मेंबर्स का मतलब मेंबर $1 अगर पे करता है तो कंपनी भी $1 पे करेगी, उस हिसाब से एक कैंपेन चलाया था। बहुत हेल्प डीएक्सन ने वर्ल्ड वाइड में सोशल वर्क में किया है और करना भी चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी हम लोग हैं, हम लोग इतना इनकम कमाते हैं, कुछ ना कुछ सोशल वर्क में देना चाहिए। तो आप लोगों की मदद से कंपनी ने भी किया है। उसके बाद अभी नया ओडीओसी $1 1 चेक जो कैंपेन है, हम लोग बधाई भी बधाई भी देना चाहते हैं डॉक्टर लिम को। वो गुडविल एम्बेसडर बने हिमसाम के, स्पायरना प्रमोट कर रहे हैं और स्पायरना लोगों तक, बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए हिमसाम की मदद कर रहे हैं। तो माल न्यूट्रिशन से लड़ना और हमारा भी फर्ज बनता है, तो हम लोगों ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया। डेक्सन कंपनी ने आप लोगों को भी इन्वाइट किया, तो उसमें हम लोगों ने कैसे किया था कि जितने भी लोग इसमें डोनेशन देना चाहते हैं वो दे सकते थे और कंपनी ने इनवाइट करने के बाद आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती है। टीओ सर भी बोलते हैं कि आप सभी को थैंक्स बोलना चाहते हैं कि आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बने और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, सभी लोगों को थैंक्स। इसके अंदर सर वही बोल रहे हैं कि वेबसाइट में, हमारे वेबसाइट में जाइए, 3 कॉलम आपको मिलेंगे, 3 कॉलम ओडीओसी का, 3 कॉलम्स आपको 3 अलग अलग कैटेगरीज आपको मिलेंगी। उसमें पहली कैटेगरी थी कि किस किस कंपनी ने वर्ल्ड लेवल में किस किस कंपनी ने ओडीओसी कैंपेन में कंट्रीब्यूशन किया है बच्चों को मदद करने के लिए। उसमें इंडिया नंबर 1 पे है, तो हम लोगों के लिए एक खुशी की बात है कि नंबर 1 पे इंडिया है। तो आप सभी लोगों के लिए तालियां और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंडिया नंबर 1 पे है, लगभग 2000 से ज्यादा लोगों ने इंडिया में कंट्रीब्यूट किया है और 2000 तो फिर भी कम है, बट और भी अभी आज भी मेरे पास भी 2-4 ओडीओसी के फॉर्म्स आए थे आज भी, और आ रहे हैं, और नए जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वो कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। इन फ्यूचर इट विल इंक्रीज मोर। एंड उसके बाद सेकंड जो कैटेगरी है वो है टॉप कंट्रीब्यूशन, जिन लोगों ने टॉप कंट्रीब्यूट किया था, जिन कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया था टॉप में, तो उस टॉप में भी डीएक्सन इंडिया है, नंबर 1 पे इंडिया है। तो आप सभी लोगों को बधाई, तो हम लोग दोनों जगह पे नंबर 1 पे हैं। उसके बाद तीसरा एक कॉलम रहेगा 100 यूएसडी, मतलब लगभग एक 7500 रुपीज, जिन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया है उन लोगों का नाम, लगभग अप्रॉक्स बता रहा हूँ, अभी के इसमें कन्वर्शन करना पड़ेगा अभी का जो रेट चल रहा है। तो उससे ज्यादा लोगों का, मतलब 100 यूएसडी से ज्यादा किन लोगों ने वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट किया है उनका नाम उस लिस्ट में रहेगा। तो आप लोग जरूर जाइए, अपना नाम देखिए कि है कि नहीं। ओके, सो आप ये तीनों कैटेगरी के में इंडिया नंबर 1 पे है और स्पेशली टीओ सर मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। इस तरीके के कंट्रीब्यूशन, इस तरीके के चैरिटी डीएक्सन आगे भी करता रहेगा आपकी मदद से। थैंक यू। यस टीओ सर। So next question for you, sir, on the screen. Can you please highlight the manufacturing unit worldwide of Dxn, especially about world's biggest factory in Siddipet, Telangana? We are very eager to know about this. Okay. So worldwide, we have manufacturing units in a few countries. Of course, the first one is Malaysia. Then we also have in Indonesia, then India, China, and Mexico. These are the 5 countries having our manufacturing units built up. And in India alone, I think we have a few factories. One is in Pondicherry, another one is Odisha, another one in Badi, another one in Assam, and the 5th one, the biggest one, is in Siddipet. And especially Siddipet, the factory will be the largest in future, a few times bigger than the production capacities of Malaysia. Malaysia now currently is having the
the highest production capacity. By CDPAT will be a few times. Yeah, few times. It could be around 5 times the production capacity for the start. And why do we set up our factory, such a huge factory at CDPAT? The reason being, for CDPAT, I think we are in line with the government call to set up a local manufacturing concern. This is with the intention to provide employment for the local people, and most likely we will also buy the products from the farm to be manufactured in our factory as well, from the local farmers, to help the local farmers, as well as to provide employment for the local people. And the next reason is we will not want to face interruption in our supply chain. As you know, our sales increase or double up every 3 to 4 years. That is very amazing. Every 3 to 4 years, you have to increase the production capacity, double up, increase by double. So in order to cater for the 10 years production capacity to come, we need to build up, not just in CDPAT, as well as enlarging the capacity in many other manufacturing concerns. So CDPAT, together with CDPAT, our Dxn will be able to meet the demand with the production capacity up to 10 years to come, 10 years from now, at least 10 years from now, with the build-up of the CDPAT factory together with all other existing factory right now, so that we have no interruption in the supply chain, not just to the local region, not just to those countries neighboring to India, but throughout the world. It will be throughout the world. And the next reason is hedging against currency. If we have factory producing most of the product sold locally without the need to import from overseas, like Malaysia, then there's no need to involve currency exchange. This is a way of hedging. So hedging against fluctuation in currency, which can give rise to a lot of problems, like some other country, Turkey, Mexico, the currency has depreciated by more than 30%. And that would be very damaging in the cost and the price of imported product. So to avoid that, we set up a local concern for manufacturing, especially in India. We have such a huge future market in India, and to cater for the neighboring countries like Bangladesh, like Middle East, like Nepal, all these countries will be supplied through our manufacturing concern from India. And another one is also important, is to build or to manufacture local herbal products, Ayurvedic products. We have a lot of good demonstrated benefit of local Ayurvedic products like ashwagandha, like this neem, like this tulsi, like the brahmi. All these are very well known, and yet only found in India. What if Dxn is able to capitalize on this and export to the world, just like Genotherapy, just like Noni, just like Russell, just like Cordyceps? I believe the world, as human as we are, they need this product
very well. So this is a huge potential to develop local product by producing at the CDP site. And these are the some of the important reasons why we set up such a huge factory in CDP. Yeah, thank you, sir. And definitely, in between this COVID situation, I think 2 or 3 months, the production or this construction of this site is stopped, but now it is already started, and very soon, because our last time management committed that we will gather. Dr. Lim also very eager to bring the people, more than 10,000 people. Yeah, And yeah. 10,000 people Perhaps in you the can share the video of the site for yes, a sure. viewer to see. Sure sir, I will share the this video. Before that, I Okay. just मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो सर ने बोला, उसके बाद हम एक वीडियो पे जाएंगे. वो वीडियो है हमारा फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन अभी तक पहुंचा है उसके बारे में. तो सर ने यही बोला कि इन ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, जिसमें मलेशिया, चाइना, मेक्सिको, इंडिया, फिलीपींस, वहां पे हमारे फैक्ट्रीज हैं. और इंडिया में सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज हैं. मलेशिया में सबसे बड़ा हमारा फैक्ट्री था. और इंडिया में जो सर ने बोला कि बहुत सारी जगह पे, जैसे पौंडीचेरी में हमारा फैक्ट्री है, उड़ीसा में हमारा फैक्ट्री है, हिमाचल प्रदेश में हमारा फैक्ट्री है, असम में है, देन तेलंगाना में सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फैक्ट्री, लगभग मलेशिया का 3 गुना बड़ा फैक्ट्री हमारा यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं. कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है. और मलेशिया का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे 5 गुना बड़ा प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया में रहेगा. और ये क्यों किया जा रहा है दोस्तों? इसलिए किया जा रहा है, सर ने वही बोला कि जब कंपनी एनालाइज कर रही है, हर 3 से 4 साल में कंपनी का बिजनेस दुगना होता जा रहा है. तो हमें आने वाले टाइम के फ्यूचर को देखते हुए हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है. और डीएक्सएन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा फ्यूचर है. क्यों फ्यूचर है? क्योंकि भी नेपाल अभी लाइसेंस मिला है, अभी उसका काम चल रहा है. नेपाल में हम प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं. हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अदर जितने भी कंट्रीज हैं, वहां पे हम सप्लाई कर सकते हैं. और सिर्फ इन कंट्रीज पे नहीं जाएंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड यहां से हमारा प्रोडक्ट सप्लाई होगा दोस्तों. तो इसलिए इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं. कि गवर्नमेंट ने जब बोला कि मेक इन इंडिया, तो डीएक्सएन कंपनी ने से बखूबी उसको सीने से लगाया और हमने अपना प्रोडक्शन से स्टार्ट किया. जहां 2 फैक्ट्री हमारे थे, अभी हमारे पास 5 फैक्ट्री हैं. और इस फैक्ट्री के अंदर हमारे एम्प्लॉयमेंट, लोकल, स्पेशली लोकल लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हम दे रहे हैं. तो दोस्तों, मैं एक वीडियो में आप लोगों को साथ शेयर करना चाहूंगा, ताकि आप लोग, अभी तक बहुत से लोगों ने ओनली स्ट्रक्चर देखा था, अभी स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत कुछ बन चुका है. और ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, प्लीज. Yes, sir. So this is the huge factory. Please unmute yourself, sir. तो दोस्तों, ये था हमारा बहुत बड़ा फैक्ट्री, अभी इस लेवल में पहुंच गया है और बहुत जल्दी ये पूरा होने वाला है. हमारा प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट हो जाएगा. इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और लास्ट क्वेश्चन इज आज का. सर, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद दिस वन. व्हेन दिस फैक्ट्री, तेलंगाना फैक्ट्री, स्टार्ट्स प्रोडक्शन, which products we can expect from the DXN in the first year? Okay, I think there are a few types of factory to be set up right now. Is under construction. So we cater for a few lines of production. One is for the GMP factory,
This is to cater for the production of food supplement like RGGL, spirulina, and some other products. And the next one will be the toiletry. So the toiletry will be for a product like soap and shampoo. And the next one will be personal care products. Personal care products like Adu Veda's personal care product series. And the next one is the wet food. The wet food is meant for the juice like noni, like Roussel, like VCO. And another one is the coffee. Coffee factory is meant for the coffee range. And of course, we are planning for another one that is the local herbal production line to produce the local Ayurvedic products, including neem, ashwagandha, tulsi, brahmi, and others. These are the 6 production lines or factories to be set up right now under construction. So it will be by next year, most likely, to start the production. So far as I know. Yes, sir. Thank you so much, sir, for giving this information. दोस्तों सर यही बोल रहे थे कि इसमें अलग अलग कैटेगरी आपको दिखाई देगा, जीएमपी फैक्ट्री जो कि आरजीजीएल, स्पायरना, ये सारी प्रोडक्ट हमें बनाने के लिए और भी बहुत सारी कैटेगरीज इसमें आएंगी। टॉयलेटरीज जिसमें सोप, शैम्पू, पर्सनल केयर आइटम्स इस कैटेगरी में आएंगे, वेट फूड्स आएंगे और कॉफी के जो एक सीरीज है वो आएंगी, एंड हर्बल प्रोडक्ट, ये एक नया चीज इसमें ऐड हो रहा है। हर्बल प्रोडक्ट जो अपना नीम है, अश्वगंधा है, तुलसी है, इस तरीके के बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हम लोग सिंगल हर्ब प्रोडक्ट्स हम बोल सकते हैं, ये प्रोडक्ट्स हम कैटेगरी में ऐड करने वाले हैं। और इस तरीके की बहुत सारी चीजें, क्योंकि अभी डेवलपमेंट है, स्टार्टिंग स्टेज है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पाइपलाइन में रहेंगे उस टाइम पे। और सबसे खास बात आपने ये चीज देखा होगा, अभी हमारे आरजीजीएल अलग एक फैक्ट्री में बन रहा है, स्पायरना अलग फैक्ट्री में बन रहा है, ठीक है, नोनिजी अलग एक फैक्ट्री में बन रहा है, अलग अलग जगह पे हमारे फैक्ट्री में बन रहे हैं। और सोप पेस्ट अगर हमारा अलग बन रहा है, देन अब ये सारी चीजें एक छत के नीचे आ जाएंगी। ओके, एक ही वन रूफ के अंदर आ जाएगा। जब वन रूफ के अंदर आएगा तो हम और भी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं। एक ही छत के अंदर आना इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यही सारी चीजें, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका गेट जो सबसे अट्रैक्टिव रहेगा, जो इवन तेलंगाना का नहीं, इंडिया का एक अट्रैक्शन बनने वाला है। हम लोगों ने जाके देखा, उसका जो 3D व्यू भी देखा है, और आपको आगे आने वाले वीडियोस में वो देखने को भी मिलेगा जो हम रिलीज करेंगे। मशरूम के आकार का गेट है और बहुत ही सुंदर, इतना अच्छा गेट उसको डिजाइन किया गया है। तो ये फैक्ट्री आने वाले टाइम में हम सभी लोगों को एक बहुत बड़ा बिजनेस लाके देगा दोस्तों। तो ये था थियो सर की तरफ से। थैंक यू थियो सर। Before going, one more question, because from last 2 years we are waiting and we are listening on one thing, and one comment we are getting from one member regarding the Korean cosmetic products. Any updates, sir, regarding Korean cosmetic products? Yeah, we are prepared. We are ready. Just waiting for the product registration. So the product registration need to go through a lot of phases, and it's not the normal type of products. They are of high quality and natural products. So you have to go through so many tests in India. So we are still waiting for the final product registration before we can proceed with the launching. So right now, we are in the launching this month for Morocco, for Thailand, and Philippines. So before that, we have launched in Mongolia, Malaysia, and European countries. So far, this is the latest status. Thank you. Okay, thank you so much, sir. दोस्तों सर यही बोल रहे थे कि जो कोरियन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं ये ऑलरेडी हम प्रिपेयर कर चुके हैं, बट हम अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट को दे चुके हैं, और इंडिया में जो प्रोसीजर होता है थोड़ा सा लंबा जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम हमें लग रहा है। बट हमारी तरफ से हम प्रिपेयर्ड है, जैसे गवर्नमेंट का अप्रूवल हमें मिल जाएगा रिटर्न में, हम इसको लॉन्च कर देंगे। बहुत सारी कंट्रीज में हम लॉन्च कर चुके हैं, और अभी मोरक्को में हम लॉन्च करने आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं अभी इसी महीना।
और कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द और हमें अप्रूवल मिले और जल्द से जल्द हम इस कोरियन कॉस्मेटिक को, जो आप सब लोग वेट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट का, हम यहाँ पे लॉन्च कर सकें। And thank you so much, Theo sir, for coming to our show and give your valuable opinions and updates to our viewers. Thank you so thank much. you. Thank you to everyone who has spent your precious time to hear my sharing with you. Thank you very much. We will meet you soon, sir, when the situation will come normal. Stay safe, sir. Sure. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. दोस्तों ये थे थियो सर और इन्होंने बहुत सारे अपडेट्स हमें दिए और आज का मीटिंग मुझे लग रहा है कि बहुत ही फ्रूटफुल और यूजफुल रहा हम सभी लोगों के लिए। तो मैं अब चाहूंगा कि आप सभी लोग ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है अपने पास तक मत रखिए, आप तुरंत अपने ये सारे इन्फॉर्मेशन, आप वीडियो को दोबारा सुनिए, यूट्यूब पे फेसबुक पे दोबारा सुनिए और सारे इन्फॉर्मेशन हम नोट डाउन करके रखें और ये इन्फॉर्मेशन हम मीटिंग के थ्रू आज या कल में इमीडिएटली हमारे मेंबर्स तक पहुंचाएं। बहुत सारे नए अपडेट्स हमें मिले हैं जो कि हमें एक एनर्जी देगा और तेजी से आगे बढ़ने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी व्यूअर्स ने आज का शो पसंद किया होगा, सभी लोग हमें अपना फीडबैक और सजेशंस जरूर भेजें क्योंकि आपका सजेशन ही हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। नीचे दिए हुए नंबर पर आप जरूर हमें व्हाट्सएप करके हमारे शो के बारे में बताइए और भी नई नई चीजें या नए गेस्ट आपको चाहिए जिनके थ्रू आपको अपडेट्स चाहिए, हमें जरूर बताएं। हमारा नंबर है 8530666093, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज मैसेजेस एंड थैंक यू। सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, जितने भी लोग यहाँ आए और आप लोगों ने अपना मैसेजेस किए, कमेंट्स किए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जो नेक्स्ट शो के जो गेस्ट हैं उनको मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। तो ये थे हमारे नेक्स्ट शो के गेस्ट मिस्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम केरला और डीएक्सन नाइजीरिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट लीडर्स में से एक हैं और टॉप मोस्ट अर्नर में से एक हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम इनकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे। इनकी सक्सेस स्टोरी कुछ लोगों ने सुना हुआ, बट इंडिया में इनकी सक्सेस स्टोरी अभी आरवीसी चैनल के थ्रू हमने सुना था। हम यहाँ पे हिंदी में, उनको मैंने बोला है हिंदी में प्रिपरेशन करके आइए सर, हिंदी में हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे, तो हिंदी में हम सुनेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी और भी डिटेल में बहुत नई नई चीजों के साथ। ओके, सो मिस्टर प्रदीप कुमार नेक्स्ट गेस्ट हैं, तो सभी लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए यहाँ पे मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, नेक्स्ट शो में मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।